Hello student, welcome back in biology class. Today my topic name is implantation. In last class we discussed about their fertilization, and after fertilization next topic is implantation. So in this topic first point you see the zygote undergoes successive mitotic division as it moves through the isthmus of fallopian tube towards the uterus. इट मीन्स जाइगोट जो होता है वो माइटोटिक डिवीज़न के बाद मूव करता है स्थैमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ. नाउ सेकेंड पॉइंट इज देयर द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीज़न इज कॉल्ड क्लीवलेज and which results in the formation of 2, 4, 8, 6 daughter cells called the blastomeres. Now after they are reaching zygote by the fallopian tube, so the process is going inside there the mitotic division. So this division process is called the cleavage. Now resultant what is there? The one cell can be divided into the 2, then 2 are divided into 4, 4 after 8, 8 after then 16. So this type of daughter cells is called the blastomeres. Now next point is there the embryo with 8 to 16. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called as a morula. It means 8 से लेके 16 जो डॉटर सेल्स वाला स्ट्रक्चर है उस ब्लास्टोमियर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मोरूला. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट. मोरूला में कॉन्टिन्यूस देयर कैन बी डिवाइड एंड ट्रांसफर्स हो जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट में. तो नया स्ट्रक्चर व्हाट इज देयर दिस वन इज द ब्लास्टोसिस्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द ब्लास्टोमियर in the blastocyst are arranged into an outer layer is called the trophoblast. It means blastocyst का जो outer layer होते हैं outer layer उसे हम क्या कहते हैं trophoblast, और inside जो clusters of cells होता है उसे हम inner cell mass कहते हैं. Now see the diagram for you understand. Now this one is the diagram of implantation. So in this diagram you see first figure are there. In here this one is ovary, and ovary releasing the ovum by the process of ovulation. So fimbria catch the ovum. You see in here this one is the finger like projection, this one is called the fimbria. Fimbria catch to the ovum from the ovary. So ovum structure you see in here, this one is the secondary oocyte, they are releasing the ovum. Now in here you see this one is the secondary oocytes and one first polar body are forming in here. So in blue color structure you see this one is the polar body and that one is there the secondary oocyte. Now in here the sperm come from the vagina and passing the cervix and then pass the uterus from here. Now sperm passing from here they can move from there. So in you see this sperm are passing from here, it means vagina, vagina से cervix, cervix से uterus से होता हुआ then come in the fallopian tube in here. So to sperm in here. Now you see this diagram are there. Sperm आया, ovum भी था यहाँ पे, they can be fertilized. So fertilization can occur in here. Fertilization can be occur in here. So see the structure. In here they are the starting the division. So sperm are interacting to the ovum in here and one sperm enter into the ovum जो ना पेलोसिडा की लेयर्स को ब्रेक डाउन करके वो अंदर चले गए. Now after that this structure you see in here fertilization is
हो गया। फर्टिलाइजेशन किस पार्ट पे हुआ था? दिस पार्ट इज नोन एज देयर, दिस पार्ट इज नोन एज एम्पुला। सो फर्टिलाइजेशन इज गोइंग ऑन देयर इन एम्पुला, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गया था। नाउ नेक्स्ट इज देयर, फर्टिलाइजेशन होने के बाद दिस वन यू सी, दिस वन इज द एग प्रोन्यूक्लियस, इट मीन्स ओवम का प्रोन्यूक्लियस है। दिस वन इज देयर द स्पर्म प्रोन्यूक्लियस and forming the second polar body in hair. So in second polar body they can be formed in hair. So next is there now after fertilization you see this one is the third diagram. Now this position in hair, in this position you see the egg pronucleus and egg pronucleus, sperm pronucleus. Now next one is the second polar body is formed in hair. So next polar body are formed in hair, they are forming the, after fusion they are forming the zygote. Now you see this position is the zygote. Zygote में inside their division are going on there, they are converting into the 2 cell stages in 30 hours. So one cell can be divided into the 2 are divided into 4 are divided into 8 are divided into 16. So this one is the stages of the cell, that's called the blastomeres. So 2 से 8 तक का जो कन्वर्जन था माइटोटिक डिवीजन का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लीवेज. नाउ क्लीवेज इज देयर द माइटोटिक डिवीजन. सो 2 cell stages are converted into the 8 cell stages, they are forming the 16 cell stage. So in here this one 16 cell structure is called the morula. Then morula, after morula they are forming the blastocyst. This one is the blastocysts, they are in here, and after blastocyst they are forming the implanted blastocysts. Because why I call the implanted? In here the blastocysts are into the blastocyst. So blastocyst structure you see there, and after blastocysts they are implanted in blastocysts. Why I call the implanted? Because they are implanted in hair, and endometrial layers is also their coverage in the blastocyst. So this was called the implanted blastocyst. Now after this diagram you see the next point. See the next point. The trophoblast layer get attached to the cell of the endometrium and inner cell mass give rise to embryo. आपने ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखा था. ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में आपने इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखा था, और अंदर की तरफ इसमें बहुत सारी सेल्स थी. तो जो इनर सेल्स होती हैं ये वाली, वो डेवलप हो जाएंगी एम्ब्रियो में. एंड दिस वन इज़ आउटर लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट, ये अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से. सो ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स गेट अटैच टू द सेल ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम आपने यहाँ देखा होगा, यूट्रस का इस तरीके से वॉल था. तो ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर्स होती हैं वो क्या करती है, ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हो जाती हैं. एंड अटैच होने के बाद जो इनर सेल मास था ब्लास्टोसिस्ट का, दे कैन give rise to form the embryo. Now the cell of endometrium divide rapidly and cover the blastocyst. So blastocyst जो होता है वो कवर किसके थ्रू हो जाता है, एंडोमेट्रियम के थ्रू हो जाता है. Now endometrium क्या होती है, they can be divide rapidly and cover the blastocyst. As a result the blastocyst गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम. और जो ब्लास्टोसिस्ट था वो प्रॉपरली क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम से क्या होता है, मतलब उसमें प्रॉपरली एम्बेडेड हो जाता है, उससे पूरी तरीके से
एम्बेडेड हो जाता है. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. द इम्प्लांटेशन लीड्स टू द प्रेगनेंसी. आफ्टर इम्प्लांटेशन they are continue in the pregnancy. So embryo can also form in here, they can be developed. So after this topic we are discuss about their pregnancy. So thank you for the watching.